sir. No, ma'am, not joined. Good morning, sir. Ma'am, yesterday you are not joined the class. Yesterday I'm not joining the class because previous night I am uh, uh, busy in Guru Purnima Utsav at Guruji's ashram. That's why I am very tired. Okay. हाँ जी सर. हेलो. जी सर, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। और एक्चुअली सर आज भी मेरे साथ कुछ ऐसी हो गई बात। मैं उठी अर्ली मॉर्निंग, तो मेरे फादर, बड़े पिताजी जिनको कहते हैं, तो बड़े पिताजी सुबह-सुबह एक्सपायर हो गए, तो थोड़ा-सा तो हो ही जाता है। हाँ जी, तो थोड़ा-सा हो गया। अदरवाइज़ आप देखते हो मुझे कि मैं नहीं जॉइन करूँगी, वो मुझे मंज़ूर है, बट मैं लेट नहीं जॉइन करती हूँ कभी। घर से ही फ़ोन आ गया अर्ली मॉर्निंग Okay, कि just funny, ma'am. Not serious. हाँ। डिस्कस किया जाए। सुरेंद्र जी here. And Yes, he yes, ma'am. uh, so I think he tells that what topic we choose. And, we can discuss on culture, diverse culture in India, diversity. Good, good topic, sir. Yes, because there are diverse cultures. Many cultures are in particular areas, different type of culture. Yes. So let's start. Please, Karuna, ma'am. Continue. Please start. मैं स्टार्ट करूं? ओके. सो गाइस कहूं, फ्रेंड्स कहूं, या सर लोग कहूं, टुडे today's topic is our diverse culture in India. So I think India is a land of diversity, है ना? We see in all fields, in language, in our culture, in our rituals, in our religion, as well as our clothes, है ना? So in every field of life, every way of life, there we find different culture, different religion, different uh, cuisines, खान पान, है ना? तो it's in every way of life you can find a diversity here. So in spite of that, uh, है ना? In spite of that, we see uh, unity here. We are after that. We are all first we are Indian. After that, we are the member of any state, uh, any city, any uh, gaon, village area. So uh, uh, the unity of this country teaches a lesson that in spite of that ki we belongs from these areas. Firstly, we are the member of our country.
and after that uh, uh, we are the member of any town area, yeah, or some other um, where we born, where we grown up, and where we learn everything. Doesn't matter, but first we are Indian. So, and it's creates lots of problem also, not only it's joined us, but also there are some problems because of that. uh, because some people, yeah, some mischievous persons thinks that their religion is superior, their caste is superior, their area is superior. It's only her his or her mistake of thinking, ये सोचने का गलत तरीका है, but they think that only their language superior, their cuisine is superior, their language is superior. So this diversity causes many problems also, है ना. Sometimes we see South Indian, they understand or think that our culture is very rich and wide, है ना. Nobody can touch our culture, है ना. And sometimes they think Maharashtrian also think that nobody touch our culture, है ना. Nobody can compare to with us, our culture. And they think then UP and Bihar wale बस ऐसे ही हैं. They have no wide culture, they have no wide rituals, but they really doesn't know how broad our culture and rituals and we itself, है ना. So uh, this diversity causes some very thoughtful problems, create very thoughtful problems जो सोचने के लायक हैं, ऐसे problems create करता है. So I think there is a both aspect, uh, good and bad, as good as well as bad also. So this is the um, I think this is the diversity in India. So my topic is finished. Hello. Yes, ma'am. Yes, Thank ma'am. you. Yes. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. How is everyone? Yeah, fine. Good. Fine, ma'am. Good. Everybody, one by one, tell me if you guys have any plans for the weekend, starting with Sushi. Yes, what you say, ma'am? Do you have any plans for the weekend? Um, no, ma'am. No. What did you do? What did you do yesterday? Today, I am watching a movie. Which one? I watched Bhool Bhulaiya. Ah, did you enjoy it? Yes. Okay. What about Divya? Do you have any plans for the weekend? I'm trying to have a conversation so you guys become more comfortable with having conversations in English. So try to speak anything. It'll just make you more confident in speaking English. Divya, are you trying to speak? You're on mute. Hello, ma'am. Hi.
So that's fine. Anybody else has any plans for the weekend? Uh, no, Namaste, ma'am. Yes, ma'am. I have planned yesterday that my some friend will go to Lumbini to visit many temples are there actually. Lumbini, Nepal. Oh, that's nice. That's a very nice plan. Ma'am, Uh-huh. now I planned I visit a Shiv temple in the weekend because Shravan month is started from today. Oh, okay. Yes. Okay, good to know. Um, okay, let's read something. One second. Okay, and what did you guys do yesterday? Ma'am, all I discuss on the topic Okay. Okay, so Khushi, do you want to go first? yes, Okay, you read this paragraph and then the same paragraph, Divya, you're going to read after Khushi finishes. So make sure that आप उसके pronunciation सुन रहे हो and just try to follow what she says, and then if there's anything wrong I will correct you guys. Yeah, you can start, Khushi. yes. There is a place 40 kilometers northeast of Portland, Victoria, which makes for an unusual visit. It is Lake Condah. Here are to be found remains of Aboriginal settlements, the circular stone bases of several hundred huts, rock-lined water channels, and stone tools chipped from rock not normally found in the area. One of the attractions of Lake Condah long ago was its fish, and the most starting evidence of Aboriginal technology and engineering to be found there are the systems built to trap fish. Water courses had been constructed by redirecting streams, building stone sites, and even scrapping out new channels at strategic spots. They built rock across the water courses to create piers and build funnels to channel wheels and fish into conical baskets. This is an eel fishing technique which has hardly changed to present day. Beside some of larger traps, there are the outlines of rectangular stone-lined ponds, probably to hold fish and keep them fresh. On the bluffs overlooking two lakes, stone circle are all the remain of ancient dwellings. Not all of the stones were quarried locally. The huts vary in size, but all have gaps for stone walls where only waist to shoulder high with the top roofed by branches and possibly packed with mud. The site presents a picture of semi-settled people, quite different from the stereotype of nomadic hunter-gatherers of the desert.
10, ma'am. Sorry, I was on mute. I didn't realize it. Divya, do you want to read this paragraph? Okay, I don't think she wants to read. Okay, so we'll just look at some of the words that are here. Unusual. Unusual का मतलब? Usual क्या होता है? यूज करने योग्य, अनयूजुअल नहीं यूज अनयूजुअल का मतलब हमेशा, और अनयूजुअल का मतलब हमेशा नहीं। हाँ, करेक्ट। अच्छा, सर्कुलर का मतलब पता है? What, ma'am? Can you repeat again? सर्कुलर Cir- कुछ आता है ना मैम, पत्रिका होता है कुछ, सर्कुलर ऑफिस सर्कुलर से इस तरह का। circular नहीं, अध्यादेश अध्यादेश होता है मैम, जैसे कुछ नियम कानून होते हैं ना सर्कुलर किसी चीज का। सर्कल हाँ मतलब कुछ गोल, कुछ गोल। सर्कल, सर्कल से सर्कुलर बनता है गोल। एविडेंस का मतलब? एविडेंस प्रमाण। प्रूफ हो गया, एविडेंस। हम्म, स्क्रेपिंग। स्क्रेपिंग, स्क्रेप करना मतलब जब वो देखा है किसी ने, जब जैसे कि हमारे पास जैसे जब हम तवा घिसते हैं साफ करने के लिए, उसको स्क्रेपिंग बोलते हैं। जब भी हम घिस करके निकलता है ना, उसको स्क्रेपिंग बोलते हैं। लोहा या कुछ भी, नेल्स हम फाइल करते हैं, उसको भी स्क्रेपिंग बोलते हैं। क्वारी, क्वारी का मतलब? हाँ, क्वारी क्वारिड स्टोन वर्क, क्वारिड लोकेलिटी, खदान कुछ हो सकता है मैम, खोदना। मतलब निकालना। एक्सट्रैक्शन पता है किसी को? एक्सट्रैक्शन जब हम कोई Yes. चीज निकाल, खोद के, एक्सट्रैक्ट निकालना, खोदना। ठीक है, ओके, सो ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, who wants to read? Surendra ji, if you have to leave you can read. Oh, he's left already. um Karuna or Nirdosh, whoever wants to read, please go ahead. Pankaj sir, please continue.
Okay, perfect. So let's look at some words. Just 1 second. Okay. Uh, Tolerant मतलब बोलते हैं ना किसी का टॉलरेट करना, मैनेज करना। हाँ, किसी को झेलना। तो टॉलरेंट मतलब होता है कि किसी को झेल पाना, मतलब व्हेन यू कैन टॉलरेट समवन यू लाइक टॉलरेंट। आई एम टॉलरेंट ऑफ sun. A lot of people cannot tolerate sunlight, so tolerant मतलब कि तुम सह सकते हो। Virtues, नहीं। वर्च्यूज मतलब जब उन लोगों के बिहेवियर जो कि मॉरल बताते हैं, मतलब हमारा हर किसी का एक मोरालिटी होती है ना। तो जब जी। हमारे कुछ एक्शंस होते हैं और वो एक्शंस बताते हैं कि हम कितने लाइफ में सही चीजें करें, गलत चीजें करें, तो वो वर्च्यू आता है वर्च्यूज से, जो कि बिहेवियर होता है, जो हमारी मोरालिटी को डिस्क्राइब करता है। गुण भी बोल सकते हैं आप में, हाँ, गुण कौन हाँ, से? गुड बोल सकते हैं। गुड इज द वर्ड। डोमिनोज का मतलब पता है? पिज्जा, पिज्जा को छोड़ के। जी। डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा को छोड़ के डोमिनोज का मतलब पता है? अच्छा, मतलब कुछ खास मतलब नहीं होता है इसका, बट लेकिन क्या होता है कि कब कोई भी एक सेट जो कि ऐसे पीसेस में कटा हुआ हो, कि एक हाफ, जब भी कुछ ऐसा होता है तो लाइक उसको वो बोलते हैं। और हर जैसे डोमिनो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि लोग जैसे एक रेक्टेंगल बना करके उसमें लाइन खींचते थे, और जो जैसे जो हर एक लाइन होती थी ना, वो एक गोल को रिप्रेजेंट करती थी कि ये गोल है, ये अचीव करना है, ये गोल है, ये अचीव करना है। बट कैसे ही होता था कि वो ऐसे लाइन खींच खींच करके ही बनाते थे। तो दैट इज डोमिनोज, इसको याद रखना, क्योंकि हम सब लोग पिज्जा तो खाते ही हैं। लीनिंग मतलब यहाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता मैम। सीरियसली वेयर? राजस्थान में मैम। पिज्जा नहीं मिलता है राजस्थान में? थार रेगिस्तान है मैम, यहाँ कुछ भी नहीं है, पानी तक मिल जाए यही बहुत है। अब राजस्थान में कौन सी जगह पे हो आप? मैं राजस्थान में जैसलमेर लोकेशन और इंडिया का लास्ट पोस्ट लॉन्गे वाला, जहाँ पे गदर मूवी का शूटिंग हुआ था। ओ, लास्ट पोस्ट ऑफ। तो वहाँ पे खाने वाने का कैसे मैनेज होता है? यहाँ पे है मैम, 60 किलोमीटर दूर है जैसलमेर लोकेशन से। वहां से परचेज करते हैं, 7 डे तो बार 10 बार डेज जाके का। लाना पड़ता है? हाँ, वकील है ना। ओ शिट, ओके। ओके, लीनिंग का मतलब किसी पे जब हम ऐसे टेक लगा के बैठते हैं ना, उसके ऊपर झुक जाते हैं, जो जैसे टेक लगाते जो हैं। हाँ, झुक जाना। हाँ। संकिन मतलब संक, सुना है किसी ने? संग द शिप जी। सैंक, द शिप संक, डूबना। अच्छा, रिजेम्बल्ड मतलब ये बहुत कॉमन वर्ड है। रिजम्बल। इक्वलिटी, रिजेम्बल। नहीं, रिजेम्बलेंस होता है कि फादर और सन का रिजेम्बलेंस होता है। जब एक जैसे, जब कोई किसी चीज की तरह दिखता है तो उसको रिजेम्बल कहते हैं। तो मतलब तुमने सबसे ज्यादा सुना होगा कि
लोग कहते हैं कि डज द चाइल्ड रिजेंबल हिज मॉम मोर और डैड मोर, मतलब उसका वो अपने पिता से ज्यादा उसकी शक्ल मैच करती है या माता से, तो लाइक दैट इज रिजेम्बलेंस, रिजेंबल, रिजेम्बलेंस, रिजेंबल्ड, सारे एक ही चीज। प्लेस इट, प्लेस इट है तो पायस, हम सबको होना चाहिए, प्लेसेड मतलब शांत, शांत, काम, कि काम। उसको यस, कभी भी गुस्सा नहीं दिलवा सकता है कोई, हम सबको प्लेसिड करने बिल्कुल। की कोशिश करना चाहिए, शांत होता है एकदम। तो इसमें भी ये लोग कह रहे हैं कि वी फेल्ट मेडिटेटिव एंड फिट फॉर नथिंग बट प्लेसिड स्टेयरिंग, मतलब एकदम शांत, सेरेनिटी, सीरीन, सीरीन तो ये मेरे एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है, ये कल से ये भी पढ़ाएगा। ये यूएस में रहता है, तो कभी कभी जब मैं नहीं आया करूंगी, ये भी इंडिया से है, दिगांता इसका नाम है, म्यूट पे है। सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। दिगांता यूर ऑन हेलो म्यूट। सर, गुड मॉर्निंग सर। उसको शायद समझ नहीं आ रहा है कैसे अनम्यूट करते हैं, बट मैंने आज ही अपने फ्रेंड से बात की है, और वो और उसकी वाइफ दोनों कभी कभी जब मैं हम कभी साथ में क्लासेस लेंगे, बट जब उसने पूरा सुना तो वो भी चाहता था कि वो भी पढ़ाया करके। आई थिंक यू आर ऑन अनम्यूट नाउ। Hello everyone. थैंक यू मैम, थैंक फॉर योर कंट्रीब्यूशन मैम। एब्सोल्युटली हम Good morning. Good morning. यहाँ तो good afternoon हुआ है पर what's the time? What's the time there? 6:30 है। इन 6:30। 6:30 a.m. Early risers, everyone. आर आल्सो Yes, इन यूएसए। yes, Yes. he's Yes. also in US. He's in a different state, but ओके, he's 2 hours ahead of me. But I think ये वाला टाइम इनके लिए भी काम करेगा। So अगर कभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी तो ही विल ज्वाइन, या कभी हम दोनों भी होंगे, एंड वील हम दोनों थोड़े नए आइडियाज भी लेकर के आएंगे कि हम कैसे आप सबको सिखा सकते हैं इंग्लिश, और मतलब हमारी भी इंग्लिश इन रिटर्न अच्छी हो जाएगी, सो लाइक दोनों का भला हो रहा है। I missed the first part of the conversation. So बाकी के लोग अभी इंडिया में same जगह पे हो या you are joining online? हर अलग अलग से। ऑनलाइन, ऑल आर डिफरेंट प्लेस। अच्छा, okay, okay. अच्छा, all over India मतलब nice. Yeah. Very nice. So यू there आर is a फ्रॉम? group also. I am from Assam. अच्छा, यू आर फ्रॉम। तो हर जगह से हो गया अभी. मल्टी कलर इन इंडिया। Yes, definitely. Yes, that is nice. Okay, so like so Diganta, we're discussing some words. Okay. So how we usually do is like Abhi Pankaj just read this passage, Uh, and so then I kind of correct their pronunciations, and then we go over the passage and we discuss some of the words that we find in the passage. got it, got it. I'm giving a heads up today. Like I'll just shadow you. Like I'll just see how Yeah. this process Okay. works, Yeah. and like yeah, because I did not prepare anything for like specifically for this session, so I'll just watch you or I'll just listen to you, and Yeah. then from the next session we can like whatever works for everyone.
Okay, sounds good. Okay, cool. Okay, so we just discussed placid. What is the meaning of it? calm, हम्म अच्छा, फिर यहाँ पे हमने ये वर्ड देखा सेरेनिटी, इसका मतलब? This is the synonyms of हाँ, लाइक सेम मीनिंग होता है, काम, पीसफुल। peaceful. अच्छा, एक्सक्विजिट का मतलब सुना है किसी ने? एक्सक्विजिट वर्ड सुना है किसी ने कभी? थोड़ा लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहे हैं कि the day was ending in a serenity of still and exquisite brilliance। मतलब कुछ हिंट कर रहा है कि कुछ ब्यूटीफुल चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, सुन के ही पता चल रहा है, राइट? कि मतलब एनीथिंग ब्यूटीफुल, यू नो। तो कुछ भी, जैसे एक्चुअली इसका मीनिंग भी यही होता है, ब्यूटीफुल या फिर एलिगेंट, ऐसा कुछ यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद गॉजी का मतलब? गॉज सुना है किसी ने? क्या होता है? जैसे बहुत ही थिन, वो देखा है जो बहुत पतले से वो वायर से बने हुए मेश आते हैं, उस तो वो गॉज होते हैं। गॉजी मतलब एनीथिंग व्हिच इज थिन एंड वेरी लाइट सा कुछ। Like yes, a ma'am. gauzy. I know gauge. Well, Gauge means जालीदार मैम, जालीदार हाँ, गॉजी जालीदार, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, and दैट्स द वर्ड, fabric. जालीदार। हाँ, तो जो गॉज होता है ना, वो उसी से आ रहा है, तो ये यहाँ पे यही बातें कर रहे हैं, गॉजी। सोम्ब्र, सोम्ब्री, ये वर्ड तो सुना होगा। इसका एक बार लाइन पढ़ते हैं। Only the gloom to the west, brooding over the upper reaches, became more As like somber. sand. Yes, correct. Very good. Um, at last, in its curved and imperceptible sun, the sun sank. Okay, I think this is, और तो कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। निर्दोष, आपने नहीं पढ़ा है आज? okay. Okay, you can Uh, start this passage. And I think read this the will, following paragraphs to answer the next four questions. Question 1, 16 to 19. Uh, Just a quick question, guys. So, ye like the objective of this is to go through the answers and like solve those, or it's just a no. planetary? So Okay. so at this point, what we're doing is like basically we're getting everybody to read passages and get their pronunciations correct. So one Got, of the things that everybody is trying to learn is like be confident in speaking English. uh-huh. So this is where we are at. So we're just trying that everybody gets a turn to speak English, read passages, and then whatever words they're not pronouncing correctly, then I just end up like correcting those words. And then the second thing that we are also doing is like every word that we discuss, people are taking notes, and then they're basically just creating their own list of words. Acha, okay. Got it. Got it. Go Okay, ahead. Go ahead. you can continue. okay. Among predatory dinosaurs, few flash enters were bigger, faster, and uh, nastier than the giant lizard of popular imagination. The Tyrannosaurus rex, at last, that is what we have been led to believe. Now, research suggests that for, for from being the parent of dinosaurs, Tyrannosaurus rex, whose priori reputation has
fascinated generations of school school children was in fast cucum, cucumber, cumbersome Hmm. create cumbersome create with a usual Creature. running speed of 25 kilometers an hour. This is a more snail's pace compared with modern animals such as the cheetah. 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 Unlike some of the predators of today's African savanna, which can change direction almost immediately, the dinosaur would have had to turn slow or risk tumbling over. And while a human can spin for 45 degrees in a 20th of a second, a Tyrannosaurus would have taken as much as 2 seconds, as would have been hampered by its long tail. Thankfully, however, all its perils, such as uh, tric- triceratops, triceratops, would have been aff- uh, affiliate, affiliated with the same lack of speed and glycerin. The findings were researched after researchers used computer modeling and biochemical calculations to work out the Tyrannosaurus speed, glide rate, and weight. They based their calculations to work out the dinosaur's speed, glide rate, and weight. They based their calculations on measurements taken from a fossil dinosaur representative of average dinosaurs and concluded the creature probably weighed between 6 and 8 tons. Calculations of the leg muscles suggest that the animal would have had a top speed of 40 kilometers an hour, which is nothing compared to a cheetah cheetah's 100 kilometer an hour. It is uh, sobering Sobering. sobering to reflect thought Though. though that an Olympic sprinter Hmm. turns out turn at about 35 kilometer an hour, not sufficient to outrun a Tyrannosaurus. Should man have been around at that time? This paragraph, I think, compared with two animals and human also, how behavior is Mhm. human, and Yes. yeah. So some pros and cons talking about it. And I know a Tyrannosaur. What is Tyrannosaur, ma'am? It's just one of a It's type of yeah. dinosaur. It's name of a dinosaur. Dino.
Tyrannosaurus Rex. Huh? That's what I think. It's Yeah, just like type of. it is it name. it Yeah, is. It it's is, a name. Yeah, yeah. So it's a scientific name. So whenever like dinosaurs were not here when humans were here, correct? So they were very ancient by the time we were not born, like humans as such. So scientists, whenever they discover, they give them these scientific names. So Tyrannosaurus Rex is a scientific name given to that creature that was once upon a time in Earth. Like we did not get to see them, but they were there at once yeah, upon yeah, a yeah, Yeah, so that's right. They're actually just talking about it, and comparing the tyrant lizard and the dinosaur. So now, okay, who knows the meaning of ferocious? So we only have like 10 minutes remaining. Let's try to do these words, and then maybe we can just all give our introductions once, and we'll call it a day. Yes, Okay. ferocious means as like Harush. मतलब ऐसे डरावना कह सकते हैं थोड़ा सा, तो जनरली भयानक हम भी बोल सकते भयानक हैं। भी बोल सकते हैं, हाँ, मतलब जैसे शेर के लिए, जैसे कोई भी ऐसे जानवर होते हैं ना, उनके लिए फेरोशियस यूज करते हैं हम लोग। फैसिनेट। fascinate, मैम, it means uh, uh, मैंने कई बार जब यूज हम, किया कि कोई लोग बोलते हैं ना ये काम के लिए बहुत फैसिनेट है। हाँ, मतलब बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत हाँ, ज्यादा। यस यस, अट्रैक्टेड, आई, मतलब उसकी तरफ। क्या हिंदी में क्या वर्ड होता है, वांछित नहीं, ऐसे ही कुछ वर्ड होता है ना कि हाँ, हिंदी मोहित एग्जैक्ट वर्ड आ नहीं रहा है, लेकिन फैसिनेट वेरी वेरी कॉमन वर्ड, मतलब फैसिनेट मतलब मोहित करना होता है, फैसिनेट हाँ योर हाँ हाँ, वर्क। ओह, आई एम फैसिनेट योर वर्क। आपके काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, प्रभावित, वो वर्ड यूज कर रही थी मैं, याद कर रही थी, प्रभावित, राइट। तो कम्बसम, you're saying something? नो मैं हम लोग यूज करते हैं ना, आई एम फैसिनेट टू वर्क, दिस टाइप ऑफ। Hmm. Aryan is a very fascinating person. उससे मिलके मजा आएगा। But right now his school is going on. He's only joined the Sunday classes. Oh, okay, 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 okay. Got it. अच्छा, cumbersome का मतलब जब कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि अगर अभी बोल दिया जाए किसी को, हम में से किसी एक को कि जा करके 50 kg का बॉक्स उठा दो और मूव करके इधर से इधर रख दो, सो दैट इज समथिंग कम्बसम, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा टास्क है कुछ। Heavily. हाँ, डिफिकल्ट मतलब मेहनत ज्यादा Heavily लग। भी, heavy भी मतलब भारी। हेवी है, हेवी एक्चुअली मैंने एग्जांपल देने के लिए बोल दिया था, बट एक्चुअली कम्बसम इज मोर अबाउट, इट्स एन एडजेक्टिव बेसिकली, जो बताता है कि लाइक कह सकते हैं कि मतलब जैसे लार्ज और हेवी चीजें जब हम मूव करते हैं, या मतलब जब डिफिकल्टी होती है, तो डिफिकल्टी से रिलेटेड है जो हम फील करते हैं इस चीज को, कम्बसम। Unlike some predators, change direction. टम्बलिंग, ये हम, मुझे याद आ रहा है हमने डिस्कस किया है शायद पहले, याद है? नहीं, आर्यन को याद होता अगर होता भी। सो टम्बलिंग मतलब टम्बल करना, गिरना। टूट हमने जाना, वर्ड यूज किया था टम्बल, टम्बल पढ़ा था पहले, थोड़े दिन पहले। स्टम्बल ओवर, तो एक स्टम्बल ओवर, टूट हम्म, जाना मैम, टूटना, स्टम्बल। टूटना नहीं होता है, टम्बल मतलब फॉल, गिरना। here is the ma'am, one thing, sorry for interrupt, the word is uh, the dinosaur would have had to turn slow or risk tumbling over। मैम, यस, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हैड को पास्ट में यूज करते हैं और इसको हैव को प्रेजेंट में, बट दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कैन यू एक्सप्लेन इट? हैव मतलब हैड तो बेसिकली थोड़ा ये ग्रामेटिकल है। क्योंकि ना ये पास्ट की बात हो रही है, ना ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि अगर ऐसा हुआ होता,
तो अगर जैसे कि हमें ये कहना होता कि कोई चीज हुई है, तो हम कहते हैं डायनासोर हैड टर्न स्लोली। या अगर अगर कोई चीज होने वाली होती तो हम बोलते कि लाइक तो मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि द डायनासोर वुड हैव हैड। तो इसका मतलब है कि डायनासोर को ये करना पड़ता इस चीज को करने के लिए। तो अगर तुम ध्यान से उस चीज को समझो, तो ना पास्ट की बात हो रही है ना प्रेजेंट की बात हो रही है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि लाइक डायनासोर को धीरे टर्न होना पड़ता, नहीं तो फिर वो गिर जाता। इस लाइन का मतलब ये है। डिड आई एक्सप्लेन इट? Okay. Yeah, yeah. यस, ओके। तो ये चीज ही बोल रहे हैं कि वुड हैव हैड कि मतलब जैसे अगर हम पूरा पढ़े, अनलाइक सम ऑफ द प्रेडेटर्स ऑफ टुडेज अफ्रीकन सवाना व्हिच कैन चेंज डायरेक्शन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो कह रहे हैं कि ये जो अफ्रीकन सवाना है ये अपना डायरेक्शन तुरंत बदल लेते हैं, मतलब तुरंत घूम जाएंगे। लेकिन अगर इनकी जगह पे डायनासोर होते तो उनको धीरे से स्लो करना पड़ता, नहीं तो उनको रिस्क होता गिरने का। ये पूरी गिरने का। सो hampered, a Tyrannosaurus would have taken as much as 2 seconds as it would have been hampered by its long tail. क्या समझ आ रहा है? गेस करो, गेसेस कहाँ गए? मतलब Hampered, ma'am. हम्म जो पूंछ है ना वो कुछ टेल तो मालूम है, वो बाधा। तो पूछ है टेल। बट ham हैम्पर्ड मैंने कई बार कॉमन सुना है किसी को hampered by the हैम्पर्ड। long tail in the hand। तो देखो मतलब हम उसका इसको समझने की कोशिश करते हैं। A Tyrannosaurus would have taken as much as 2 seconds as it would have been hampered। तो ऐसा क्या लग रहा है कि बाय इट्स लॉन्ग टेल, मतलब अगर उसकी टेल से कोई चीज तो रुक रही है। इस हैम्पर्ड से लग नहीं रहा है कि कुछ ब्लॉक हो रहा है, कोई चीज रुक रही है। इस लाइन को पढ़ने की अगर हम कोशिश करें, डिस्टर्ब। हाँ, हैम्पर्ड मतलब कोई चीज ब्लॉक करना, अटकना, या उस चीज की वजह से कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट होना, वो चीज है। ये मतलब है इसका। एजिलिटी, स्पीड एंड एजिलिटी हमेशा साथ में यूज होते हैं, मतलब हमेशा तो नहीं बट ज्यादातर। जब कोई बहुत जल्दी मूव कर लेता है, एजिलिटी मतलब बॉडी में जब फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं कि व्हेन यू आर एबल टू मूव फास्ट, उस चीज को बोलते हैं। तो बोल रहे हैं the findings were reached after researchers used computer modeling and biochemical calculation to work out the dinosaur speed, agility and weight। तो ये तीन चीजें बेसिकली ये लोग डायनासोर में मेजर कर रहे हैं अपने जो भी इनकी रिसर्चेस हैं उनके बेसिस पे। तो लाइक स्पीड हो गई, उसके बाद कि कितनी उनकी बॉडी किस बेसिस पे, क्या फैक्टर्स है जिससे उनकी बॉडी फास्ट मूव कर रही है, फ्लेक्सिबल है, और उनका वेट। They based their calculations on measurements taken from a fossil dinosaur representative of an average Tyrannosaurus and concluded the creatures probably weighed between 6 and 8 tons। इतना वेट होता था डायनासोर का, 6 to 8 tons मतलब। um, and like इनकी टॉप स्पीड होती है 40 kilometers an hour, which is nothing compared to cheetah's 100 kilometers an hour। It is sobering to reflect through an Olympic sprinter about 35 not sufficient मतलब काफी पर सफिशिएंट, काफी भरपूर। करेक्ट, भरपूर, यस। सफिशिएंट वॉक, भरपूर मात्रा। हाँ, आई थिंक दैट्स इट। और कोई वर्ड्स रह गए हो तो बता दो, नहीं तो फिर सब लोग बस अपना 2 मिनट में फटाफट इंट्रोडक्शन दे दें, स्टार्टिंग विद खुशी कि कहाँ से हैं एंड क्या सीखना चाह रहे हैं, एंड देन वील मूव ऑन। I'm just past class to take how to speak English confidently. I joined the class. Okay, ma'am. ओके, कौन सी क्लास में हो आप?
I am just past 12th, Okay. and I Okay, thank you, Kushi. Naveen, you want to go next? Yes. Hello, sir. My name is Naveen Kumar. I am from Bihar. I am working as a admin head as a construction department, and right now I am living in Jaisalmer locations, Rajasthan. Nice. Thank you, Naveen. Pankaj, you are on mute, Pankaj. Okay, Nirdosh, do you want to go next? Hello, sir. My name is Nirdosh Yadav. I am speaking from Mumbai, but my native place is Bihar, and I am doing job here as well as I want to improve my communication also because I live in metro city and here is big requirement if you want to become achieve something different. Most important English communication. So that's why I want to learning. Yeah. Thank you so Nice. much, sir. Thank you, Nirdosh. Diganta, do you want to give your introduction? Yes. So अभी कितने कितने हो आप लोग यहाँ पे इस ग्रुप में? Like हमारा एक अभी तो WhatsApp group भी है. We'll add you to that. But like usually anywhere between 5 to 10 people join every day. Awesome, awesome. So guys, मैं तो अभी यूएस में हूँ. I am originally from Assam. I did my education बीटेक तक मैंने असम में ही किया. फिर I went out to do job. आईटी में घुस गया था. फिर 2 साल वहाँ पे बेंगलोर में था. And then I moved over to US. यहाँ मास्टर्स करने आ गया था मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से. And since that time I have been in the US. And it's amazing meeting you guys. Like, definitely, I like the way you are inspired to learn English. It always helps to be very English आती है. English सब कुछ नहीं है, पर English आती है तो आज के ज़माने में बहुत जगहों पे it does help. So it's always good to learn English. And like the way we present ourselves, लोग का कभी कभी बहुत जगहों पे लोग का attitude is change हो जाता है. वो भी गलत है. बस किसी का लैंग्वेज पकड़ के तुम किसी को जज कर रहे हो, वो भी गलत है. पर इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न एन एडिशनल लैंग्वेज. सो इसको एक एडिशनल लैंग्वेज की तरह सीखो. इफ इट वाज माय एडवाइस, rather than like हाँ इंग्लिश सीख रहे हैं, it's just a language. Take it as a language, and then like it will become much easier. yes. Thank you. बट Okay. एक्चुअली क्या है ना कि आप जो हम लोग सर क्लासेस चालू किए थे ड्यूरिंग एक्चुअली स्टार्टेड दिस क्लासेस इन ड्यूरिंग द कोविड टाइम last 2 years. So many of people joined that time, more than 20-25 people. But they अच्छा. have लॉकडाउन चल रहा था वहां पे, तो सब हाँ. आदमी ज्वाइन करते थे. काफी बच्चे हो गए हुए थे. फिर पंकज सर ने डिसीजन लिया कि इसको रेगुलर ही करेंगे. तो हम लोग आई हैव टेकन आल्सो क्लास फ्रॉम यूएसए 4:30 अच्छा. हमारे. हाँ, अर्ली मॉर्निंग 4:30 उस समय भी सारे आदमी ज्वाइन करते थे. मोर देन 20 पीपल्स ओवर देयर. अब पता नहीं, अच्छा. अब तो सब खत्म हो गया हुआ है. बट ऑलमोस्ट 10 पीपल तो रहते ही रहते हैं एनी हाउ, जो कि हाँ, नहीं. अभी And जो like चल रहा है. once you guys become confident in the language, then you can also teach other people. तुम लोग भी सिखाओ. I'm like I confident, don't know, like but practice. It's actually all. after that a little bit hesitation is remove our mind. And then when I हाँ. join the classes, I never speak a little words and never about ourselves also. But अब सारे आदमी बोलते हैं तो मजा आता है. चलो हाँ, ठीक है, नहीं. थोड़ा बहुत. बेझिझक बोलो. इट्स नथिंग कि इंग्लिश नहीं आती. देयर इज नथिंग टू बी ashamed of it. और ऐसा कुछ नहीं है. अगेन एज आई सेड, इट्स नहीं नहीं जस्ट अ नहीं, लैंग्वेज. नॉट एनी. में दिस इज द हम भी कुछ लैंग्वेज. नया लैंग्वेज सीखेंगे तो हमें भी हेजिटेशन होगी. कल को हम लोग स्पेनिश सीखने लगे तो हमें भी हेजिटेशन होगी. एंड इट विल हेल्प ओनली लाइक इफ यू प्रैक्टिस. Yes, So practice I'd make say like perfect. my suggestion would be to like keep practice. Yes, exactly. So keep talking with each other as much as possible. जहाँ भी अटको वही मतलब कोई like notes है या कोई dictionary है वो पकड़ लो. पर keep practicing. So it will help you. But yeah, I'm Thank looking forward to have sessions with all of you. 4:30 you. को तो नहीं जगाऊंगा मैं किसी को. पर All are curious about the learn the English. All are curious about always, अच्छा. sir.
बट इनका फाउंडर हमारे पंकज सर है। इज अ ग्रेट अच्छा, मैन एक्चुअली। ही इज ऑलवेज स्पोक इन नवीन करो, सब आदमी हम लोग लगे हुए रहते हैं न्यू थिंग्स लर्न के लिए। नाइस। ही इज ऑल्सो पुट द मैसेज इन लिंक्डइन एंड अदर वेबसाइट आल्सो, तो वहां से भी अच्छा, रिस्पॉन्स आते रहते हैं। बट उनके पास डेटाबेस बहुत है पंकज सर के पास। अच्छा। और पंकज भी इस ग्रुप में लाइक ही इज लर्निंग या? ही इज ऑल्सो लर्निंग अच्छा, एंड ऑल्सो ही इज वर्किंग एज अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट इन पुणे। गॉट इट, गॉट इट। सॉरी, मैं भूल गया था। खुशी, निर्दो नवीन आया था उसके बाद, फिर पंकज एंड निर्दोष, राइट? Yeah, Pankaj missed his introduction. I was. He was on mute, sorry. हाँ. Yeah. Okay. Anyways, let's connect again tomorrow. And Pankaj, I will send you Diganta's phone number so you can add him to the WhatsApp group. So like Diganta, we share the passages that we read every day on the group. So then these guys practice or like read it again. Okay. And like whenever you joining or you have यस, any things to share, you can share it in the group. पंकज सर अनम्यूट हो गए हैं। अब पंकज सर Oh, इंट्रोडक्शन। Pankaj, you forgot to give your introduction. You are doing such a great job. Like this platform is possible because of you. So thank you very much for making it possible for everyone. Yes, ये कोविड का देन है। that's right. That's right. Not what मैम is मतलब before COVID. उस समय मैम ना We are तीन तीन all ग्रुप चलते थे, तीन क्लासेस चलते थे, बच्चे का अलग चलते थे, हम लोग का अलग चलता था। मतलब काफी मतलब बहुत शानदार चल रहा था। अर्ली मॉर्निंग 4:30 टू 5:30 हम लोग का, फिर एक बच्चे का, फिर एक बच्चे का, तीन क्लासेस चलते थे हम लोग का। हाँ, क्योंकि जहाँ से मेरे पास ईमेल आया था उसमें बहुत सारे लोग थे, तो तब मेरे को लगा था जब मैंने ज्वाइन किया, दैट्स व्हाट आई थॉट दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज़ आई थिंक उस लिस्ट में कम से कम 100-200 पीपल तो थे ही इजीली। तो देन आई वाज सरप्राइज्ड कि लाइक कोई भी क्यों नहीं सिखा रहा है, मतलब यू नो। तो वहाँ इंडिया में टीचर्स लाइक नहीं कम है क्या जो लाइक इंग्लिश पढ़ाने वाले? देयर आर नॉट मेनी पीपल। इंडिया का एक्चुअली इंडिया का टाइमिंग डिफरेंट है ना सर। अब अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे कोई थोड़ी उठेगा सर यहाँ पे। अच्छा, हाँ, नहीं वो भी है, हाँ। अब जैसे आप लोग सर वहाँ है तो इवनिंग हो रहा होगा, हाँ, हम लोग का इट्स सुबह है। 9:30 एट 9:30 लाइक इन द इवनिंग। अच्छा, नाइट हो गया फिर तो। हाँ। रात। नहीं नहीं, ना ना, लोग को इतना तो दिक्कत हो सर क्या जाती पॉसिबल। है। हाँ, राइट, राइट, हाँ। Got it, got it. So she, if she's in New Jersey, she has the same time zone as me. So अगर मेरे यहाँ 9:30 हो रहा है तो उनके वहाँ भी अभी 9:30 हो रहा होगा. So I think she logs in earlier. इसलिए तुम लोग को 4:30. हाँ, got it. हाँ. नहीं, nice. Like, whatever is comfortable to you.
या जिसको भी जैसे मतलब फाइंड ए सूटेबल टाइम फॉर एवरीवन, जिसको जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो. सम माइट नॉट वेक अप दैट अर्ली, या इतना सवेरे किसी को चीजें इतने अच्छे से समझ ना आए. डे टाइम ऑफ द डे ऑल्सो मैटर्स कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, सीखने के लिए तुम्हारा माइंडसेट रेडी है कि नहीं. तो इस हिसाब से ग्रुप में डिस्कस करके फाइंड ए सूटेबल टाइम. लाइक आई हैव नो कंपल्सन, दिस टाइम इज गुड फॉर मी. तो व्हाट्स द टाइम नाउ इन इंडिया? 7:10. So it's 10, 11, 12. So 9.5 hours ahead, I guess. यहाँ से, right? हाँ, it's nine. India is 9.5 hours ahead of Eastern Standard Time. So I am in Eastern Standard Time. Indian Standard is 9.5 hours ahead. So यहाँ 9:38 हो रहा है, वहाँ I mean 9:40 हो रहा है, वहाँ 7:10 हो रहा है इसलिए. So this time also works perfectly for me. अगर किसी का काम नहीं हो, लाइक मृणालिनी मैम का भी जो टाइम है, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे और उस हिसाब से वी कैन कंटिन्यू द सेशंस. पर बहुत लोग का अगर सवेरे हो, अर्ली शिफ्ट हो, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम 7 में, लाइक 6:37 का. और ये सेशंस हाफ एन आवर्स के होते 5:30. 5:30 is good, sir. हैं. 5:30 इज गुड क्या? अच्छा, ठीक. Yeah. Thank you, everyone. Have a Okay, good sir. day. See everyone tomorrow. Thank you, ma'am. Thank for your contribution, ma'am. Good Absolutely. night. Take care, all of Thank you. Take care, everyone. Bye. Good night everyone. Good night, sir.